Hello everyone. Welcome to Know the Concepts channel, and today we'll be studying about next topic, and that is what are the different types of chemical reactions, right? You have done what are chemical reactions, and during a chemical reaction, this also in previous classes you have done that during a chemical reaction the mass of the atoms remains same, and whatever new substance is formed, it is just because of the breaking of the old bonds and formation of the new bonds. So bonding we will study in another chapters, and we will now study first of all the basic types of chemical reactions, right? So although there are many reactions, so many reactions are there, but there are 5 basic reactions which are there. 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और बाकी रिएक्शंस उसी के ही पार्ट हैं सारी. सो व्हाट आर दीज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? सो नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation reduction reactions, right? So these are 5 basic type of chemical reactions. Keep on noting down how many types and what are the names of different reactions. That will make your learning faster. So side by side only. So first today we will be studying the first type of chemical reaction, and that is known as the combination reaction, right? Ab combination reaction we are doing. So as the very name is suggesting, combination reaction. Combination means combine मतलब क्या होता है? To join. जब दो चीज़ें, दो substance join करें उसको कहते हैं combine. So a type of reaction in which one or more substance, two or more substance combine together to form single product, or in other words, in the language of science we can say when two reactants combine together to form a single product, that reaction is known as a combination reaction. Like we will see with the help of air, like suppose there is one substance and we have named this substance A. Like A combines with other substance, any other element, it can be an element, it can be a compound. So suppose A joins with B, what it will form? It will form a new product, a new substance if it forms AB. This type of reaction is known as combination reaction. इसमें क्या हुआ? Two substance ने combine किया to form one single product, right? जहाँ पर दो substance, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, they join together to form a single product, that is known as a combination reaction. अब इसको हम example की फॉर्म में करेंगे. How? What are the examples? Now first example अगर हम इसका लें तो that is the combination of calcium oxide, which is also known as, this is quicklime, when it combines with hydrogen. This is in liquid form. What it forms? Like calcium, it will combine with OH ions of water and it will form calcium hydroxide. This is called slaked lime, right? Learn the names also. This is quicklime, this is slaked lime. Plus what is left behind over here? Here in this reaction, what happens when we add some amount of a little, we take a beaker and we can add, we can take little water in it, and if we add quicklime in it, what will happen? Slowly and slowly bubbles will start forming, and we will form that the temperature of the mixture, temperature of the beaker will, if you will feel, if you will touch, it will become warm. That means the temperature of the reaction will increase. So here a lot of heat is produced in this reaction.
means calcium oxide, that is the quicklime, reacts with water very vigorously to form a lot of tremendous amount of heat and this slaked lime is formed. अब इसको how can we say, कैसे कह सकते हैं कि ये एक combination reaction है? How? Because here one substance is quicklime, another substance is water, मतलब दो substance combine कर रहे हैं. Suppose हम इसको A मान लें और ये है B. ये दो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट और इस सिंगल प्रोडक्ट को हमने क्या मान लिया, इसके मिलने से बना है ये, तो हमने इसको मान लिया ए बी. सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म along with the formation of, this is not included in the product, so along with the formation of heat, so this AB is formed. So such a reaction is known as combination reaction, right? It must be clear to you now. Another example, we can also understand this with by taking another example like burning of coal. In burning of coal, coal is what? Carbon. So when carbon burns in air, this is in gaseous form, also gaseous form. ये physical states जब हमने बैलेंसिंग करी थी तब कैसे लिखनी है ये हमने करा था इसमें. So when carbon burns in the presence of air, it forms carbon dioxide. Up see, this is also a combination reaction where two reactants combine together to form one single product, that is carbon dioxide, isn't it? A plus B is AB. ये combination reaction हुई, right? Now साइड बाय साइड आप बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कार्बन 1 है, ओके. ऑक्सीजन एटम्स हाउ मेनी? 2. ऑक्सीजन एटम्स 2, so the equation is balanced. Third reaction of combination reaction is like when you can take the example of here, you can see. Before taking the third example, I would like to tell you over here is this slaked lime. This slaked lime, when ये आप वाइट वॉश में देखोगे कि ये स्लेक्ड लाइम जो है, आप जब वाइट वॉश कराते हैं अपने घर में तो ये तब यूज होता है. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस स्लेक्ड लाइम, व्हेन दिस कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, जब आपने ये यूज़ किया एक्वस सोल्यूशन ऑन द वॉल्स, जो आपने वाइट वॉश के लिए यूज़ किया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर में कंबाइन कर गया एंड इसके होने से क्या होगा, दैट इट विल फॉर्म अ थिन लेयर, थिन शाइनी लेयर ऑफ व्हाट इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर, शाइनी लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, प्लस रिलीज ऑफ सम वाटर and this is also solid. So this is also, although this is also the formula of marble also, तो ये shiny layer इसके after 2-3 days shiny layer इसके ऊपर बन जाती है, right? Then you can also take, we were doing burning of coal over here and other examples of combination reaction we will study now. Now see, some reactions, आपने इसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखा कि tremendous amount of heat is released. So there are few reactions in which along with the products tremendous amount of heat is also released. So all those reactions in which along with the products heat is also released, such reactions are known as exothermic reactions, right? So वो भी इसी का पार्ट है. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या आ गया? एक्सो. अब इसको समझो पहले. व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सो मीन्स समथिंग गोइंग आउट, आउटवर्ड्स. एग्जिट से समझिए आप. थर्मिक, थर्मल वर्ड, थर्मिक वर्ड होता है रिलेटेड टू हीट. सो
ऑल दोज रिएक्शंस, कितना सिंपल हो गया लर्न करना. व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? All those reactions in which heat is given out, such reactions are known as exothermic reactions, जो कि आप अपने क्विक लाइम वाले केस में अभी अभी देखा था, which is also a combination reaction. ठीक है, अब हम exothermic reactions के कुछ examples देखेंगे. और कोई अगर आपको माइंड में आ रहा है, यू कैन नोट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो. जैसे कि हम उससे पहले हम ये भी कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बहुत सिंपल सा, आई वुड लाइक टू टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे फॉर्मेशन बर्निंग ऑफ कोल है, ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लाइक हाइड्रोजन gases form plus oxygen, they combine together, one product, one reactant, another reactant to form H2O. This is also a combination reaction. Two substances combining to form one single product. इसमें आप बैलेंसिंग चेक करते रहिए. हाइड्रोजन इज 2 over here, ऑक्सीजन इज 2 over here, but 1 over here. So what you can make 2 over here. बट हाइड्रोजन एटम्स कितने होगा? अभी यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर भी आपने इसको 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स 2. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट. बट इसमें हीट नहीं इवॉल्व हो रही, सो दिस इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो हम बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक. ऐसे बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मिल जाएंगे. दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. सो वेयर हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट में फर्स्ट एग्जाम्पल आप कर सकते हैं. एक तो आई टोल्ड यू ऑफ द कैल्शियम क्विक लाइम एंड स्लेट लाइम वाला एग्जाम्पल. देन अनदर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? मीथेन. द फॉर्मूला फॉर मीथेन इज CH4. व्हेन दिस बर्न्स, two products, when all these gases burn, they form carbon dioxide and water. Now in this reaction also, along with this, a lot of heat is evolved, right? So this is also an example of exothermic reaction. Then the second example is very known example, respiration, right? अब सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज रेस्पिरेशन? इज लाइक व्हाट डू टू लिव, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट रेस्पिरेशन इज. टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, व्हाट डू वी नीड? वी नीड फूड. फूड हम खाते हैं, वॉट एवर फूड वी ईट, एंड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी. और उस एनर्जी से हम सर्वाइव करते हैं. Now this energy is, how this energy is produced, कैसे बनेगी ये? Whatever food we eat, that goes in our body and it is digested by the digestive processes and it is finally converted into glucose. और ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. इतना सबको पता है. सो दिस ग्लूकोज व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस एनर्जी. और इसके साथ साथ लॉट ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड, और इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. इसको अब अगर हम लिख के देखेंगे रिएक्शन को, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. सो व्हाट इट विल गिव? Plus energy. Here energy is released, so that is why this is known as exothermic reaction. और बैलेंसिंग हम चेक कर लेंगे यहाँ पर, राइट. Here also balancing you can check. कार्बन 1 1 इक्वल है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिए. एंड here 2 and 2 4. So now this is balanced chemical equation. साइड बाय साइड मैं आपको बैलेंसिंग भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स कराती रहूँगी.
So respiration is another example of exothermic reactions. Then the third example is decomposition of vegetable matter. Like vegetable matter जितना भी है, जब वो डिकम्पोज होता है, खराब हो गया और खराब होता जा रहा है, डिकम्पोज होता जा रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंपोस्ट में. और इस प्रोसेस में भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गर्मी निकलती है इस प्रोसेस में, एंड दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट. एंड अदर एग्जाम्पल इज कैल्शियम वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही था. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम वाला. So these are few examples where exothermic reaction, which is also a combination reaction. So I hope आपको combination reaction समझ आ गया होगा. When all the reactions in which one or more substance combine to form a single product are known as combination reactions, right? अब to one or more reactants मतलब क्या हुआ? उसमें वो atoms भी हो सकते हैं, elements की form में भी हो सकता है, like hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, एंड वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे ये दिस इज ग्लूकोज इज अ कंपाउंड, CH4 इज अ कंपाउंड, मीथेन गैस, राइट. सो व्हेन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको पढ़िए, लर्न करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड we will meet in our next video. Till then, if you like it, if you like my teaching, keep on sharing and liking and subscribing so that others are also benefited, right? Thank you.